हाँ हाँ, अब पार्टिसिपेंट को कोई उधर जो है समझ उनसे एक बार वहाँ Two performance for you that is prepared by Ganshala kids. थोड़ा दूर हो, ऐसा दो, ऐसा, okay, like that, okay.
Mic test 1, 2, 3. Hello. Vandami Namaskar, Shamiji. Jai Jain, everyone. If you can please put your phones on the silent mode, please. And if possible, if everybody has the mask, if they can have the mask on. If not, then we have the mask on the back table, if they can wear it, please. So congratulations to all the Gyanshala kids who are graduating today. Om Haram to both the Shammijis and all the Gyanshala teachers and the Gyanshala coordinators for giving their time and effort for teaching them their lifetime values, which they will remember their whole life. I need to announce some upcoming events. Paryushan Parv is around the corner. They will start from 24th of August through 31st. All the programs will be in person and also on the Zoom, but please try to come at the center. Final schedule for all the programs will be emailed to you all by next week. Now I invite Sheetal Chheda, our Gyanshala coordinator, to please come on. Thank you, Mishka. My name is Namisama Samiji. Jai Jinendra, everyone. Thank you all for coming today to celebrate Gyanshala graduation ceremony with us. Let me start the program by saying thank you to both the Samiji that we owe our deep sense of gratitude, without whose guidance, blessing, and continuous inspiration, there will be no Gyanshala. I especially want to acknowledge the contribution that Samni Niti Pragyaji has made during the course of this year by giving us new curriculum, new books, and teach whenever there was a need. She was teaching at Jain Group, Darshan Group, and in some instance, she also taught at Charitra Group. Samniji, on behalf of all the Gyanshala children and the Gyanshala team, thank you so much for all your efforts. I'm not entirely familiar with all the hard work that went into producing, shipping, and procuring these new books, but I know that wasn't an easy task. I would request you to share that knowledge with us and later in the program. We also introduced our new topic this year. It's called Jivan Vigyan in our new curriculum. So whatever our children learned in Jainism class, they were able to translate into day-to-day life. In this sense, it made our Gyanshala program more holistic than what it was before. Of course, that meant that we had to readjust the schedule, find new teachers, and those teachers were willing to learn the material and teach our children. Once again, I would like to thank Samni Niti Pragyaji and the teachers who came forward to help us. All our Gyanshala students are very bright, and we continue to get impressed by the efforts of our teachers, parents, and
Nav, Vedi, Krish, Daksh, and Yash. Can you please come on stage? situation रहे cool, हमारी यहाँ शाला wonderful.
A big omaram to all the kids. We had Krish, Yash, Dak, Nav, and Vedi. And we have a second performance by Arhan and Mishka Jain. A big omaram to Arhan and Mishka. Now I would like to call Mandeep Jain to give a speech. To me, Somniji has been an amazing teacher. She has taught me and other students about the four gatis, the six types of leshas, the 12 vrats of Shavika, the five Mahavratas, the six substances, Irya, Vahya, Sutra, Ashram, Samvar, the seven fears, the Kashayas, Pratikraman, the universe, the 10 dharmas, the five buddhis, the four bhavanas, Lord Parshvanath, the values of forgiveness, tenderness, honesty, purity, truthfulness, renunciation, the victory of friendship and unity, and the life stories of Sati, Chandan, Bala, and Drita Dharmi Arhana. These chapters raised many questions for me, and I liked the way that Samniti patiently took time to answer each and every one of them. Through the knowledge I gained inside my Jainism class, I learned how to become a better person and now help others even more than before.
Thank you, Mandeep, for a wonderful speech. Now we will be moving to the program where we're going to be recognizing all the students and their achievements and all the teachers. And all the students will be receiving an e-gift certificate by mail for graduation. The first group we have, we call the youngest group, ages 4 to 6. The group is called Arhan, and the teacher's name is Yogita Jain. She was teaching them from Austin. Thank you, Yogita ji. And we have 4 students, and two are present right now. Can you please come on stage? Can Shashank Bhaiya come on the stage also? The first certificate will be going to Mishka Jain. Let's go down here. We'll give it to- Okay, sorry. And the second one is for Yash Chera. No, not for Arhan group. And we had 2 other students. One is, can Mishka and Yash come on stage again? Big Omaram to our Arham group. And next we have, okay. Next group we have is Darshan group. I'm sorry, Gyan group. In Gyan group we had, in Gyan group we had 4 teachers. Samniniti Pragyaji and Swarna Jain were teaching Jainism. Shashi Jain teaching Jivan Vigyan, and Neha Pokarna teaching Hindi class. Big Omaram to all the teachers. And we had 5 students who did outstanding in their final exam. The first one is Arhan Jain. Please come on stage. I would like Hashmat Bhai Doshi to come on the stage. He did 100% his final exam and he was a good performance. Big Omaram to Arhan. Just sit down right now. This, you can come down. The second one we have Daksh Lunia. Please come on stage. He also did 100% in his exam and he was a good performance.
Next one, we have Nav Jain. Please come on stage. Shashank Bhaiya, can you please come back? No. Thank you. Thank you, Nav. Omaram. And then we had Lavit Jain. Then we had Riya Chandalia, Veer Jain, Ashi Dedia, Naira Bandari, Arni Jain, Vedant Jain, Anya Velan, and Ishan Gusar. Omaram to the whole GAN group. Next, we have a Darshan group. And in Darshan group, our teachers were Samniti Pragyaji and Dr. Sunil Anchalia. They were Jainism teacher. Seema Jain was our Jivan Vigyan teacher. Anusha Jain was our Hindi teacher. And Sunita Anchalia was our Sutra teacher. A big omaram to all the teachers. We had two students who did outstanding in their exam. One is Mandeep Jain. Can you please come on stage? Hasmukh Doshi, can you please come on the stage? Big omaram to Mandeep. Yeah, we'll give you. Thank you. Then we had Samyak, he's not here. Then we had Rosalind, Siddhi Jain. Krish Chheda, please come on stage. Yeah. Thank you. Then we had Anika, Harshit, Aditya, Arya, and Shivani. Big omaram to our Darshan group. Oh, Shivani is here. I'm so sorry. Big omaram. Thank you. I'm on the last group we had is called Charitra Group. We had 13 and above. The teacher is Alok Uncle. Thank you, Alok Jain, for teaching our oldest Gyanshala students. And we had Adishri, Neil, and Urvi Jain. They did 100% attendance and a good performance. We also had sometimes we had Subra, Anisha, and Krish. Thank you to all the students and all the teachers and all the volunteers. Thank you. We wanted to conduct the ceremony right after the final exam, but we were not able to do that due to all the people were traveling this year. Even now, we have a lot of kids who are absent, but we had to hold the ceremony because we're starting our new session on August 14th. If you have not registered, please register. As you already know, we are conducting a hybrid program where people who are in Houston will be coming to JVB, and who are out of Houston will have a Zoom link for them. Lastly, I wanted to thank Samniji for giving me this opportunity, and Alok Uncle for giving me the opportunity to be a coordinator. And thank you once again. Okay.
I'm sorry, we're gonna have the teachers come up on the stage also to give certificates. Swarna Ji is not here. Okay. Shashi Jain is not. Seema Jain, please come on stage. You get a gift certificate. Swatantra uncle, please come on stage to give the. Oh, sorry. I think I just. This is for Seema. This is for Seema. This is for Anusha Jain for teaching Hindi. Alok Jain for teaching Charitra Group. Alok uncle, if you can please come. Sheetal Gosar, also our Gyanshala coordinator, is also the teacher, please. Slide here. Coordination. Can you put that slide on screen? Yeah, right. Go to the next one. So here, when Sheetal was asked to do the coordinator job, her first question to us was, what does a Gyanshala coordinator do? And I said, the best thing I can't answer that question for you because I don't do that job. The best person to answer that question is the one that is already doing it. So of course she got information and a lot of help from her, and she finally got on and started doing the job. But let me tell you, on the next slide, please. A coordinator, who is a coordinator? A coordinator is like a conductor in an orchestra. Without the conductor, there could be noise but not music. Similarly, without a Gyanshala coordinator, there can be chaos, but not a Gyanshala. So that is the role that a Gyanshala coordinator does. It involves talking to the parents, it involves talking to the children, it involves coordinating with Samnijis, and if the teachers can't perform, well then she has to find a substitute teacher. It involves an awful lot of tasks, which requires devotion, commitment, time. It requires making sure the online system is working, students sign in. It involves making sure the students get assigned to the right classrooms. And if the system is not working, then it involves calling the people who ever helped the system. So in other words, there's an awful lot of work that goes on behind the scenes for the Gyanshala to run smoothly. And for that, this little certificate and a minor gift card doesn't really do the justice for the effort and time spent, but it's our way of recognizing the work that Sheetal has done. So congratulations, Sheetal. Thank you very much. At this point, I would like to call Samni Niti Pragyaji to say a few words. आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरास्पद वंदनीय समनी जी, उपस्थित बंधुओं बहनों और ज्ञानशाला के बच्चों, अभी मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी ज्ञानशाला के बच्चे यहीं बैठे रहेंगे क्योंकि उन्हीं के लिए ही मैं बोलने जा रही हूँ। तो सभी पेरेंट्स भी यहीं रहे और ज्ञानशाला के बच्चे भी यहीं रहे।
So I would like to start from a very small story. We all use a pencil in our day-to-day life, and especially the Gyanshala kids and the elders also use the pencil. So the pencil parable, what tell us? In the beginning, the pencil maker spoke to the pencil saying, there are 5 things you need to know about me before I send you into the world. The kids are also the same thing. So here, the first thing the pencil maker said to the pencil, that you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in someone's hand. The second point the pencil maker said to the pencil is that you will experience a painful sharpening from time to time, but this is required if you are to become a better pencil. The third thing said, you have the ability to correct any mistakes you might make. And the fourth thing said, the most important part of you will always be what's inside. And the fifth point, the pencil parable said that no matter what the condition, you must continue to write. You must always leave a clear, legible mark, no matter how difficult the situation is. The pencil understood the whole thing. He promised and remembered and went into the box, fully understanding its maker's purpose. Now, replacing the place of the pencil with you, always remember them and never forget, and you will become the best person of the world. Every one of us want to become the best person of the world, but we have to do something to become the best person. So number one, it is said that you will be able to do many great things if you allow yourself to be in your adult's hand. If you allow yourself in the Gyanshala teacher's hand, we can see that Gyanshala teachers are working very hard. The teachers can work very hard if the students come. And I request all the parents, many parents maybe are in the online Zoom, many parents are present here. Make sure that your kids come here so that the teachers can teach. And I see the teachers' dedication. The teachers wait for the student for 1 hour, 2 hours, but sometimes the students are absent. So make sure to parents also that the teachers come on the time and allow other human beings also to access the thing. Number two, you will experience a painful sharpening from time to time by going through the various problems, but you will need to become a stronger person. As I can see that there are a lot of the problems in Sunday, maybe there are a lot of the schedule, but we all know that in Sunday there is JVB Gyanshala. So you can make sure that today is JVB Gyanshala. I can miss the other programs, no problem, but I will not miss the Gyanshala. Because what the school cannot teach, the Gyanshala can teach you a lot of the things. So if we want our child to do something in the future, because in the future, the parents says that there are a lot of the problems coming with the kids. So if we want to make our kids better, if we want to do something for the kids, the best place in the world we can say is that Jain Gyanshala. Wherever you go, we can see in the whole world, lot of the places are there. If there are 2 kids, if there are 3 kids, but the parents try to take them in the Jain Gyanshala. Number 3, you will be able to correct mistakes you might make or grow them through. There are a lot of the mistakes, maybe in the teachers, maybe in the Gyanshala coordinator, maybe in the students, what we need to make it more correct. Day by day, we can give our suggestions, we can give our feedback that what we need to improve so that we can make our Gyanshala more beautiful and kids can get more benefit from that. Number 4, the most important part of you will always be what's on the inside. So whatever we will learn here till 13 years, till 16 years, it will go for the 100 years. So if we want that 100 years to be bright, we need to make our this 14, 15 years to be dedicated in the Gyanshala. And the 5th is, on every surface you walk, you must leave your mark.
No matter what the situation, you must continue to serve everyone. So this is the best point. So everyone is like a pencil created by the maker for a unique and special purpose. Each Gyansala student, I would like to say that they are very special and they perform very good. I would like to say about some Gyanshala kids that they have performed very well. And like I can see in the Arhan group also some kids like Utkarsh Golcha, I know means he has performed very good. And in the Gyan group, like as Sheetal has said, that some students have done the outstanding and they have studied also very work hard and they have done their full attendance like Lovit Jain. He has most probably he has attended all the classes and he got 100% in exam. Arhan Jain, he has done the good performance, but he has not attended all the classes. He has come very late, but he has done very good performance. He got 100%. Daksh Jain, his father is always worried about him, but he has done very good and he got the 100% in everything. Ria Chandalia also has done very good. Nav Jain, he also has worked very hard. And when the exam was going on, I have seen Nav Jain and Naira Bhandari. Both of them has worked very hard on that day. And this time I made little bit of confusing question paper also. And I have made the very big question paper. So they have given the whole Jainism exam for the 3 hours. And so it's a very big task for the kids. And I have seen that they have done very good. Ashi Jain and rest of the kids also. Veer Jain has given very good. And this time we have done, and in Darshan group, I've seen Mandip Jain and Samyak has done very good performance. And I can see that we have done this year the new curriculum of Gyan, Darshan, Charitra, and it was the rolling curriculum. This time we have done Gyan 3, and now the next kids will come. We will start the Gyan 2, Darshan 2, and same the Charitra 2. We are going to start it. So it was a big task that this was the new curriculum, how the kids will know, and it was the big also for the teachers. So I would like to give thanks to the teachers, coordinators, everyone. And we have also added Jivan Vigyan, and I have seen Jivan Vigyan Seema Ji. I thought that this book will take 3 years to complete, but she has completed in 1 year. Not 1 year also has not completed, and she has completed. And I have seen that she taught very well. And Sashiji Jain also has taught very well in the Jivan Vigyan. This was the new curriculum we have added. And it was a big task because it was the Zoom and both in person. So we all are trying our level best to do it. And I would also like to thanks to Sunilji Anchalya and Yogita Jain. Sometimes I go in different classes when my class is finished and I see that Yogita ji is also teaching very well. And for example, I would like to say some kids come here and I say, this is right. The kid said, no, you are not right. My Yogita teacher is right. Okay, that's good. So she is also teaching very good. So once more, I would like to thanks to all the Gyanshala teachers, to all the Gyanshala parents, and to the Gyanshala coordinator for doing very good. Om Arham. Now I invite Alok uncle to please say some words. Adharniya Samni Malya Pragya ji, Samni Niti Pragya ji, Vandamya Namaskar. And to all the people that are present here and those that are online, all of you are a JVB family, my Sada, Jain and the two, all of you. Before I go on with what I have to say, I'd like to specially recognize Hasmukh Bhai Doshi. You saw that he came and he awarded the certificates and he gave the gifts. He has been a constant inspirer and helper of Gyanshala. He also used to teach Hindi in the past. Perhaps I need to work on him to see if he can start to do that again. We do need the Hindi teacher, Hasmukh Bhai.
But thank you very much for your devotion and commitment and inspiration for our children. So let me first of all offer my heartfelt congratulations to all the Gyanshala students and express my sincere thanks to the teachers and to Samni Niti Pragyaji for their hard work and for their commitment. You know that Gyanshala is our flagship program. And you might ask, well, what is a flagship program? What does a flagship program mean? Flagship program is a program that we are recognized by. If somebody says, what does JVB stand for? What does JVB really do? We will say to them, well, JVB teaches young children through Gyanshala about Jain values and Jain sanskar. So that's the short definition of a flagship program. And of course, Preksha meditation and teaching spirituality, they are part of our flagship programs as well. But today I'm going to address specifically the Gyanshala program. There are many reasons for us to call the Gyanshala program as a flagship program. I'll mention two first, and then there are other two reasons that I'll mention in a few minutes. So it is a flagship program because it inculcates Jain sanskars. Inculcates Jain sanskars in our children. What does that mean? It means it teaches them Jain principles, Jain values, and Jain culture. That is what they get when they come to the Gyanshala. And the second important reason is that it ensures, this is somewhat of a selfish reason, call it selfish if you will, but it's an important one. It ensures that when they grow up, we hope, and the hope is a big quotation mark, we hope that some of them will take on the responsibility of running and maintaining this beautiful facility for future generations. That is the only way to sustain it. So it's a part of a sustenance program that we have to have Gyanshala so that it continues. I'll digress here for a minute and share with you that this facility was opened in 2009 at a cost of roughly $1.8 million. For a small community like ours, it was a large sum of money. But we were able to still do it due to the vision, hard work, and commitment of several of our founders, like Swatantra Bhai, like Jugal Malani, like Vijay Goradia, and many patrons like Vijay Bantia, Sampath Rampuria, Hasmukh Bhai Doshi, Raman Patel, and many, many others. Only very few of them are in attendance today. If I was to guess how much it will cost if we were building it today, any guesses? Any guesses from the audience? How much do you think it will cost? Yeah, my guess is upwards of north of $5 million. But $4 to $5 million is probably a reasonable estimate. Our community hasn't grown any bigger since the center was opened. So I seriously doubt that if we were to build it today, that we would be able to do it. My purpose in sharing this information with you is simply to create a level of awareness about how fortunate we are in having such a wonderful facility, so that with that awareness, you and your children took full advantage of what this facility has to offer. Gyanshala is a prime example of that. If your children are not enrolled, please make sure that they are. And any other people that you know of in your friends, in the community that you think can benefit from this type of education, reach out to them, bring them here.
so that we can transform their lives as well. And not only Gyanshala, I would also say that I'll encourage you to participate in the other programs that this center offers as well. Now, talking personally, I've been involved in the Gyanshala program first as a teacher, and then a teacher as a teacher for about 3 years, and then as a contributor towards its curriculum for the last 2 years or so. All I can say to you is that as a result of doing that, my affection for it and my interest in this program, they have both grown stronger as each year goes by. I love it more as each year passes on. Perhaps that is because I now have a better understanding about its impact on our children. I think Samniji, Niti Pragyaji mentioned that earlier, but I don't think we fully grasp. I don't think we fully grasp the impact a Gyanshala education can have on our children's future. I teach the Charitra Group, and normally a child enters this group after having attended the Gyanshala program for about 9 years. Let's say at the age of about 13. The 3 years of Charitra Group education prepares them for applying the Jain principles and Jain values in their day-to-day life. Now listen to what I have to say next, very carefully. If done correctly, then it raises their self-esteem, their self-confidence, and prepares them to take on whatever life has to offer. I will repeat. If done correctly, Gyanshala can raise their self-esteem, their self-confidence, and prepare them for whatever life has to offer going forward. But there is a caveat here, and the caveat here is that is only possible if they've had the benefit of full 12 years of Gyanshala education. What you cannot expect and what we cannot do is you just bring them for 2 years and hope that somehow magically this will happen, that they will face on whatever life has to offer. No. Full 12 years of Gyanshala education, if they attend, then that is a commitment we can make. Let us talk about this is the design. This is the design of the Gyanshala program. That is the intent of the Gyanshala program. But let us talk about some realities now. What I have witnessed in the last couple of years is a significant drop in the enrollment in Charitra Group from our own small group of families that are associated with JVB. And if they do enroll, I also notice that they do not attend the classes regularly. There could be one obvious reason for it. And the obvious reason could be, perhaps I'm a bad teacher. And, nobody is perfect. But if that is the case, we still need to hear that feedback. Maybe we'll find somebody else. I don't think, though, that is the reason. When I have tried to inquire, the most frequent reasons I hear is that the children have too much homework. They're enrolled in many extracurricular activities, which leaves them very little time to devote to the Gyanshala class. These are legitimate reasons. I understand them. Being a parent myself and having gone through that phase with my children, I can understand those reasons. There is no doubt that our children are under considerable pressure. Having said that, though, I don't believe that those reasons should be used as a justification for not enrolling them in the Gyanshala class or for them not attending the class. I say that because in the grand scheme of things, how much time are we talking about?
We are talking about a maximum of 5 hours in a month. And if the Gyanshala lasts for, let's say, 9 months, we are talking about 45 hours for 1 year. Give me a break. Our children can't spare 45 hours in a week for that type of commitment. Let us get real. In terms of cost-benefit analysis, we are all businessmen. We all understand money. We understand cost and we understand benefits. In terms of cost-benefit analysis, 5 hours of time as a cost versus the benefits that the children will derive from attending the Gyanshala class, there is no way you can put a value on that benefit. So even that benefit and the cost-benefit analysis shows you that this is the right thing to do. But I realize that time pressures will always be there. In higher grades, of course, and in life in general, these time pressures become a fact of life. What we need to teach our children is how to deal with them, not to avoid it. The solution is not to avoid the problem. The solution is to face it and find out how to deal with it. This requires a dialogue between the child and the parents. There are techniques like time management, techniques like meditation, which certainly can be used. Please consult Samnijis or consult me if you like, if you need assistance in that area. We are here to help. But giving up on an important activity, such as Gyanshala class, for these reasons is a very bad decision for the future of the children. The children may not see it that way, but I sure hope the parents do. Because if parents don't see it either, then we have a problem. I'm a firm believer in the saying that where there is a will, there is a way. So using such excuses for not enrolling or attending Gyanshala simply goes to show that both the parent and the child are giving a very low priority to Gyanshala compared to whatever else they have going on in their lives. Giving low priority to Gyanshala, in my mind, is a huge mistake. I would go so far as to say that it is inexcusable. It can only mean one thing, and that is that as a parent, now listen to it carefully, it can only mean one thing, that as a parent, we have failed to understand the importance, the uniqueness, and the invaluable quality of our religion. Let me illustrate with a simple example. I'm sure you have all heard about Chintamani Ratan, right? Have you heard about Chintamani Ratan? From the stories, from the scriptures, from whenever you listen to pravachans. What is a Chintamani Ratan? Somebody help me understand, what is a Chintamani Ratan? A ratan that you look at, once you possess it, it removes all your chintas, right? It takes care of all your problems in life. That is a Chintamani Ratan. So according to stories, whoever has a Chintamani Ratan, they can use it to get rid of all their problems. I would say that following Jainism with right understanding, in the right spirit, with full devotion and commitment, gives each one of us this Chintamani Ratan. Let me repeat. Following Jainism with right understanding, in the right spirit, with full devotion and commitment, gives each one of us this Chintamani Ratan. So not enrolling your child in Gyanshala is like depriving him or her from getting their own personal Chintamani Ratan. You wouldn't want to do that, would you?
Of course not. That is why I used the word inexcusable earlier. That is why not enrolling them or enforcing it is inexcusable. Now is not the time or place for me to get into the details about why I have compared Jainism to Chintamani Ratna, but I'll be happy to discuss with you offline and spend as much time as necessary to convince you. Earlier, I said Gyanshala is one of our flagship programs, and I offer two reasons for it. Both of those reasons are very important, of course, but there are two more reasons that are also worth knowing. The first one of them is that the education we provide in Gyanshala is not the same as that which the children learn in the schools or in universities, unless they happen to be specialized institutions dedicated to teaching Jain philosophy. Of course, if they are dedicated to teaching Jain philosophy, then they are the same. But if they are not, then these are two very different educations. Don't be confused that this is not necessary. Well, he'll pick up whatever we were going to teach him here in the universities or in school. He will not. The second reason is that as a follower of Jainism, each one of us has a moral responsibility. And I'll address both of these now. So the first point is, how is Gyanshala education different from that in the schools and in the universities? Gyanshala education is about teaching us who we are. Universities don't teach you that. Schools don't teach you that. Gyanshala is about teaching our true nature, about our culture, about our values, about our principles, our beliefs, about right and wrong, about our behavior, about our attitude, our religious beliefs, our codes of conduct. That's what we teach here. In other words, Gyanshala helps us in developing our personality, emotional stability, social responsibility, but it does that on the foundation of spirituality. Using the analogy of an automobile, and it may not be exact, but picture it, if you will. So I'm going to use the analogy of an automobile. I would say that Gyanshala provides the engine part of the automobile. The most important part, I might add. Education in the schools and universities prepares us for working and living in the society. It provides the means of livelihood. Using the automobile analogy above, it provides the chassis for the automobile. So clearly, we need both the engine and the body to run or to work or to function. In other words, to lead a meaningful life, we can't do without one. If I was to simplify it even further, I would say Gyanshala सिखाती है जीवन जीने की कला, और universities और colleges सिखाते हैं जीवन चलाने की कला, जीने की कला और चलाने की कला. Hopefully that illustrates the difference between the two in a better way. In one of Acharya Shri's books, and I may, what should I say? I mean, there are no words to describe what Acharya Mahapragya Ji has given to the society as a whole. But in one of his books, he illustrated it beautifully. Of course, he didn't use his automobile analogy, but he basically emphasized the importance of Gyanshala education as a precursor to education in other normal institutions. After listening to this, I'm sure that some of you, there are always people who have arguments, who will say, no, this is not right. So let me take their viewpoint for a minute. So some of them will object to my example, and they'll say, we know several people who didn't attend Gyanshala
and they are very successful leaders, and they are successful entrepreneurs, and they are otherwise very successful in the society. So your analogy fails. My answer to them would be yes and no. Yes, in the sense that I agree with you, there are such people who have succeeded, who didn't go to the Gyanshala, who apparently, obviously, on the surface, look to be very successful. And the explanation I would give is there are some people who are naturally gifted, perhaps from their previous sanskars or their upbringing at home, so that they did not need this formal Gyanshala education. But that's a very small percentage of such people. But I can also give you a counterexample, in fact, many counterexamples, where people became very successful. They earned lots of money, they earned status, they earned name in the society, but they were miserable in the latter part of their lives because they didn't know what to do with themselves. In other words, in a nutshell, they did not have a life's purpose. In the final analysis, the benefit of Gyanshala education is that it keeps the children grounded as they go through life, such that they neither run after money nor lose focus on the real purpose of life. The other benefit is that when we get the children here at the age at which they are, these are very foundational years, impressionable years, years in which their personality is formulated and molded. And I might add, years in which it can be molded. Because once it's formed, it's very, very, I'm sure you know that, you've experienced that. This preparation through Gyanshala education offers great protection against bad influences, bad tendencies as they enter college and first experience full independence from the influence of the parents. Now I'm coming back to the last reason, which is as a follower of Jainism, what is our moral responsibility? You all know, the followers of Jainism and Jain philosophy, that we are in the Panchamara, right? Fifth era of the time cycle, which is about 21,000 years, of which about 18,000 or so years remain. So as a Jain, it is our moral responsibility to ensure that we do everything possible to pass on Bhagwan Mahavir's teachings on to future generations. And you might ask, well, how is that related to what we are talking about in terms of Gyanshala? So with Samniji's blessing, their guidance, and their direct participation, JVB is doing this part about moral responsibility in three ways. First, through Gyanshala for the younger children, through weekly JVB programs of pravachans and anusthans for the rest of the society, through annual camps and special workshops. So hopefully, through this message, I was able to convince you of the following. Number one, that we are very fortunate to have such a wonderful facility and a great Gyanshala program under the guidance of very learned Samiji. For that, we will always be grateful. Second, that there is a difference in what children learn in the school and colleges versus what they learn in Gyanshala. Third, that both attending Gyanshala and attending school and university is equally important for the proper development of the child. And finally, that we have a moral responsibility to do our part in spreading Bhagwan Mahavir's message. And it begins with enrolling our children in the Gyanshala program. Thank you for listening patiently. Om Arhan. Guidance by Shamni Malipragya ji.
लज्जाया संयम बंधेरं कल्याणे भागे सविसोहिताणम् जैने गुरु सयं अनुशासयन्ति देहं गुरु सयं पूजयामि देहं गुरु सयं पूजयामि। आराध्य कुंदन उपस्थित बंधुओं बहनों, थोड़ा खड़े हो जाएंगे सब। बोलिए, भगवान महावीर कितने आसनों का प्रयोग करते थे पता है? का प्रयोग करते थे। दीपेश जी कहाँ है? आप मुझे म्यूट कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है मुझे म्यूट? ठीक है, चलिए। भगवान महावीर कितने आसनों का प्रयोग करते थे? जल्दी से बोलिए। हैं? मेरी आवाज देखिए, या तो मेरी आवाज आ नहीं रही है, आ रही है सबको? ओके, तो थोड़ा सा धीरे करेंगे। भगवान कितने आसनों का प्रयोग करते थे? 84। कितना? अपन जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं, भगवान खुद 84 आसनों का प्रयोग करते थे। 12 निर्जरा के भेदों में एक भेद है काय क्लेश। काय क्लेश यानी आसनों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा शरीर को साधना, ये निर्जरा का एक कारण है। तो अपन चलो काय क्लेश से ही, लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं, काय क्लेश से ही अपनी बात को आगे प्रारंभ करेंगे। तो ताड़ासन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, पूरा शरीर को जितना तनाव दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए अंगूठे तक आए, झुके अंगूठे को नीचे, झुके झुके नीचे, नीचे तक झुके झुके झुके। भरते हुए हाथों को पुनः ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए राइट में झुके, भरते हुए स्ट्रेट, छोड़ते हुए लेफ्ट में झुके, भरते हुए स्ट्रेट, छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। सब रिलैक्स हो गए, एनर्जेटिक हो गए, अब बैठना चाहेंगे। अच्छा, जिनको मन है कि हम थोड़ी देर खड़े रहेंगे, आप लोग खड़े भी रह सकते हैं, ठीक है। जिनको मन है कि हम थोड़ा सा बैठना चाहते हैं, तो आप बैठ भी सकते हैं।
आराध्य को वंदन, उपस्थित बंधु बहन। शिष्य ने भगवान से पूछा, किम भया पाणा। पहले आधा घंटा का मैं सबको संवर पचका देती हूँ, समय का आप लोगों की यदि आ गई हो तो आधा घंटा का देवगुरु धन की साक्षी से आधे घंटे तक 5 आश्रय 18 पाप 6 काय सेवन करने का त्याग है। आधे घंटे तक अनावश्यक बोलने का त्याग है। शिष्य ने गुरु से पूछा, किम भया पाणा, जीव किससे भयभीत है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जीव किससे भयभीत है। जीव यानी आप लोग, कोई भी जीव है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सारे के सारे जीव किससे भयभीत है। अपने कर्मों से भयभीत हो जाए तो संसार का कायाकल्प हो जाए। जिस दिन ये भय पैदा हो जाए कि मेरे कर्मों का बंधन हो रहा है, मैं सोचती हूँ ये प्रवचन वगैरह की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब शांति से एकदम आराम से शांति से बैठे रहेंगे। है मृत्यु से। और एक बात और है, यदि मृत्यु से भी भयभीत होते ना तो भी कायाकल्प हो जाता, क्योंकि हम किसके लिए जी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सब चीज, आखिर तो एक दिन मरना है। दुख भया पाना, सारे जीव दुखों से भयभीत हैं। दुख का कारण क्या है, कई कारण हैं। मूल ये कारण यदि देखें, भगवान ने कहा अज्ञानम खलु कष्टम। दुख का मूल कारण क्या है, अज्ञान। अज्ञान मूल कारण है। भगवान ने यहां तक कह दिया, जावंत विद्या पुरुषा सभ्यते दुख संभवा। जितने भी अविद्यावान पुरुष हैं, अविद्यावान यानी जो अज्ञानी है, सभ्यते दुख संभवा, सारे की सारे क्या कर रहे हैं, दुखों को उत्पन्न कर रहे हैं। आपको लगता है कि अमुक मुझे दुख दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो अज्ञानी है। और अज्ञानी को क्या करना चाहिए, हमेशा माफ कर दो। कोई कुछ भी करे उसको इतना ही सोचो, बेचारा अज्ञानी है, नासमझ है, माफ कर दो। तो भगवान ने कहा जितने भी अविद्यावान वो सारे के सारे दुखों को उत्पन्न करते हैं। तो एकांत सुख का साधन क्या है, देखिए भगवान ने शब्द क्या प्रयोग किया, एकांत सुख। एकांत सुख किससे मिल सकता है, नानस सब्बस पगासनाए। एकांत सुख का साधन भगवान ने कहा ज्ञान। चाहे हम सफलता देखें, चाहे विकास देखें, हर किसी भी फील्ड में हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, विकास करना चाहता है। सफलता और विकास के लिए क्या जरूरी है, बिना ज्ञान के कोई भी किसी भी फील्ड में सफल हो ही नहीं सकता। तो 10वें कालिक सूत्र में भगवान ने कहा अन्नाणम परियाणामि नाणम उपसंपज्जामि। मैं अज्ञान को छोड़ता हूं और ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूं। तो बहुत जरूरी है ज्ञान का विकास। और ज्ञान देखिए वो इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, इस जीवन के अंतिम समय तक मुनाफा देता ही देता है। उसके बाद भगवान ने भगवती सूत्र में कहा है ज्ञान और दर्शन व्यक्ति के साथ जाता है। बच्चा जन्मने के साथ छोटा सा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, क्या बोलते हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा कुछ नहीं, ये ज्ञान लेके कहाँ से आया है, कहाँ से लेके आया है, पिछले जन्म में। कहते हैं देवता विलाप करते हैं, 3 कारणों से विलाप करते हैं। जैसे अपनी की यहाँ गोष्ठियां होती है, देवलोक में भी ऐसी गोष्ठियां चलती हैं, वहां भी प्रश्न करते हैं। इंद्र अपनी सभा में जिज्ञासा करते हैं, कोई देवता खड़ा होकर के कुछ बोलता है, इंद्र उसको बिठा देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, सारे सभा में सब तिरस्कार करते हैं। कहते हैं उस समय देवता विलाप करते हैं
काश मुझे इतना अवसर, सुंदर अवसर मिला था, मैंने ज्ञान क्यों नहीं किया। तो ज्ञान का विकास मरने के बाद भी ज्ञान है वो साथ में जाता है। सबसे 3 आवश्यक चीजें क्या क्या है लाइफ में, हर व्यक्ति को चाहिए। 3 आवश्यक चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। सबको पता है रोटी के बिना एक दिन नहीं चल सकता, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। इसके बाद कोई प्रथम आवश्यकता है, वो क्या चीज है? क्या चाहिए? मौन, फोन। ऐसा है यदि जिनकी फोन के बिना आदत पड़ जाएगी, देखिए हर चीज का क्या है, व्यक्ति को नशा होता है। आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद आपको फोन से इरिटेशन होने लग जाएगा। कभी भी यदि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, करना यदि स्टार्ट कर दिया, ये लगेगा मैं दूसरों के लिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आप फोन का उपवास करना सीख जाएंगे। 4 घंटा मुझे फोन छूने का त्याग है। ऐसे से हम बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, आश्चर्य हुआ मुझे। भाई मैं 5 घंटा, ये अपने वहां हुआ था एनआरआई का जो कैंप हुआ था वहां इंडिया में, गुरुदेव के सामने, तो कोई हमारे से संपर्क कर रहे थे। उन्होंने बोले कि समझ जी यहाँ यूएस में जो भी हैं मुझे सबका नंबर चाहिए, लेकिन मैं किसी का नंबर दिया, आपको इसमें बोलना है। मैंने सोचा पता नहीं जो भी है, सामने वाले को कहना कि भाई हमको कह दो। जब वो जैना में मिले, मैंने देखा उनके पास 2 मोबाइल था। मैंने उनको पूछा आपने अपना मोबाइल क्यों नहीं दिया, अब मोबाइल का नंबर क्यों नहीं दिया, दूसरों का क्यों दिया? देखिए जवाब क्या दिया उन्होंने। बोले समझी जी मैं मौन करता हूँ, मोबाइल का मैं त्याग करता हूँ। कभी 5 घंटे का त्याग कर लेता हूँ, कभी 6 घंटे का त्याग कर लेता हूँ। मैं एनी टाइम मोबाइल यूज नहीं करता। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति, आज उनके पास कम से कम 10 से 20 हजार लोग उनके काम करते हैं। वो बिना मोबाइल के रहता है, मिनट टू मिनट। बोले अपन डिस्कशन करेंगे, मिनट बता दिए, 30 मिनट का अलार्म लगा लिए। बोले मैं बिना सेकंड बिना मिनट के चलता नहीं। तो आज इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, तो मैं बात जो बोलेगी चौथी जो आवश्यकता मोबाइल की या फोन की, शायद मैं सोचती हूँ इतना जरूरी नहीं है जितना हमने जरूरी मान लिया है। जीवन से ज्यादा भी मूल्य हमने फोन को दे दिया, भूल गए, खुद को भूल गए। नींद में भी यदि आपको पता चल जाए कि किसी का मैसेज आया है तो क्या करते हैं आप? यदि जो मोबाइल रख के सोते हैं, जल्दी से देखेंगे भाई किसका मैसेज है। उठने के साथ शायद भगवान को कितना याद करते नहीं करते, किसका किसका मैसेज आया। सामयिक भी पचक लेंगे भाई, तुरंत हमको फोन चेक करना है, पता नहीं किसका मैसेज आया। तो हमने खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दिया? दूसरों को दिया है। मोबाइल का मतलब क्या है? दूसरे सारे जो जुड़े हुए। तो खैर मैं कह रही थी सबसे ज्यादा 3 आवश्यक चीजों के बाद कोई चौथी आवश्यकता है, वो है ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए आपके पास धन है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन है, चाहे गोल्ड है, मनी है, गोल्ड है, ये सब चीजें ऐसी है, ये खोने की भी संभावना है और चोरी होने की भी संभावना है, होती है। लेकिन ज्ञान न खोने की संभावना है और न चोरी होने की संभावना है। यदि मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन, क्या उत्तर होगा? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन? आप बोलिए समझिए, हम हैं सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? जिसके पास पावर है, जिसके पास वेपन्स है, जिसके पास मनी है, किसको बोलेंगे आप पावरफुल? देखिए ये है वाइफ सबसे ज्यादा पावरफुल है। और हमारी बहनों की तो चेहरे में खुशी तो आ ही गई। तो चलो अच्छा है यदि भाई लोग
अपने वाइफ को इतना सम्मान देते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल मानते हैं, बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो मैं बता रही थी, देखिए चाहे शस्त्र है, चाहे धन है, जो भी है ये एक समय तक है, और शस्त्र से भी ज्यादा पावरफुल शास्त्र है, एक समय तक काम आएगा। आज कोई व्यक्ति पोस्ट पे भी है, 3-4 साल 5 साल जब तक पोस्ट पे है लोग उसको याद करेंगे। आज यदि मैं पूछूं भाई आपके यहाँ कौन कौन प्रेसिडेंट हो चुके हैं, किनका किनका नाम याद कर पाएंगे? बड़ी मुश्किल से नाम याद आएगा। आज यही चीज हम देखें, दुनिया में पूजा कौन जाता है, जिसकी ज्ञान की कीर्ति किसकी फैलती है? आज एडिसन को लोग याद करते हैं, आइंस्टीन को लोग याद करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं। आज जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने कुछ इन्वेंशन किया है, अपने ज्ञान से कुछ किया है, लोग उनकी पूजा करते हैं। तो ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है। तो संपूर्ण मानव जाति के लिए देखिए, जिन्होंने भी अपने ज्ञान से, मेधा से कुछ किया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए वो क्या बने हैं? एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो ज्ञानी है वो हमेशा सम्मान का पात्र होता है, आदर का पात्र होता है। तो भगवान ने क्या कहा? पढ़मम नाणम, इसलिए कहा पढ़मम नाणम तोदया। ज्ञान बड़ा या आचार बड़ा? देखिए आचरण भी व्यक्ति कब कर पाएगा? जिसके पास कुछ ज्ञान होगा। तो इसीलिए कहा गया है नेवर स्टॉप लर्निंग, अध्ययन करना कभी छोड़ो मत। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे लास्ट समय तक व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ये भी यहाँ इतने जितने बैठे, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या कभी कुछ सीखने का लक्ष्य रहता है? जिनके बच्चे हैं, पोता पोती हैं, सिखाएंगे नौकार मंत्र सीख, महाराज के पास लेके आएंगे, स्वामी जी के पास लेके आएंगे, 1-1 घंटे की दूरी से लाएंगे, स्वामी जी इसको कुछ सिखाओ। अभी आते हैं दीपेश जी, आते हैं सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को लेकर के, मैं देख रही हूँ 7 दिन से डेली आते हैं, अपना ऑफिस का काम यहाँ बैठ के करते हैं कि बच्चा आना चाहता है स्वामी जी के पास, चलो 3 घंटा स्वामी जी के पास ले जाए, 1 घंटा स्वामी जी के पास ले जाए, कुछ न कुछ सीखे स्वामी जी से। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या लक्ष्य रहता है हमको कुछ सीखना है, हाँ या ना? या कुछ याद करने का लक्ष्य रहता है? आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, यदि बुढ़ापे से बचना है, डेली कुछ न कुछ सीखें। इतना ही सीख लिया, 25 बोल का पहला बोल, बोले जोर से, सबको आता है पहला बोल, इतना सा ही सीखना और कुछ नहीं करना है। लेकिन डेली गति 4 मत सीखते रहना। दूसरे दिन क्या सीखना है? जाति 5, थोड़ा सा ही सीखें, लेकिन अवंद्य संध्या हो, एक दिन भी हमारा बिना सीखे हम सोए नहीं। तो ज्ञान के लिए 2 चीज जरूरी है, सुनना और जानना। सुनना और जानना, देखिए सुनने के बाद व्यक्ति का क्या होगा? श्रवण के बाद मनन होता है। तो 1 घंटा भी सुनते हैं। आप लोग जानते हैं गाय चारा जो खाती है कितनी देर खाने में लगाती है और उसको पचाने में कितनी देर लगाती है, पता है किसी को? है? खाने में 10 मिनट लगाती है तो उसको चबाने में 3 घंटा लगाती है। चबाती रहती है, एक बार खा लेती है, उसके बाद वो जुगाली करती है, उसको चबाती रहती है। तो 1 घंटा सुने हैं, 3 घंटा उसका हम मनन करें। आचार्य महाप्रज्ञ ये भी कहते थे, यदि आप लोगों को कुछ लिखना है, जो भी लिखने की हॉबी होती है, 100 पेज पढ़े हैं तो 1 पेज लिखें, 1 पेज लिखने के लिए 100 पेज पढ़ें। मैंने कई बार कहा है, जैसे स्वाध्याय के बाद अनुप्रेक्षा जरूरी है, ध्यान के बाद भी अनुप्रेक्षा जरूरी है। जो हमने पढ़ा उसका हम मनन करें, मनन करने से ही लाभ होगा। जैसे आपने धन कमाते हैं, कमाने का लाभ है या उसको इन्वेस्ट करने का लाभ है? कमा लिया और रखना नहीं आया, आया और खर्च कर दिया, क्या फायदा? खाना खाया, खाने का महत्व नहीं है, खाने के बाद
चबा तो खाना मतलब खा लिया, खाने के बाद पचाना, पचाने का पावर कितना है, डाइजेशन पावर है या नहीं। तो ज्ञान सुनना भी बड़ी बात नहीं है, पढ़ना भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसका मनन करना। तो सुनना और मनन करना, इससे निष्पत्ति क्या होगी, सम्यक दर्शन को जगा पाएंगे, सम्यक चेतना को जगा पाएंगे। तो ये सारा चीज, तो ज्ञान का अर्थ ही है कि जानना, जितना जानेंगे हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होगा। क्षोभसम शब्द जानते हैं आप लोग क्या होता है? क्षोभसम का मतलब क्या है? जैसे आपने पढ़ाई की तो क्या हुआ, ज्ञानावरणी कर्म क्या होगा, ज्ञान आपने किया, तो इससे कर्म सिद्धांत की भाषा में इसको क्या बोलेंगे हम? हाँ नहीं, टेक्निकल वर्ड क्या है, क्षोभसम। अब देखिए क्षोभसम को इतना सा समझे, कपड़ा मैला है, आपने धोया, जितना जितना धोया उतना उतना साफ हुआ। आत्मा मैली है, कर्मों से मैली है, कर्मों का आवरण है, जितना जितना धोया, हमने ज्ञान किया, उतना उतना साफ हुआ। ठीक है, आत्मा साफ हुई, इसका मतलब उस साफ जो आत्मा हुई उसको हम बोलते हैं क्षोभसम। क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? तो जितना जितना हम ज्ञान सीखते हैं उतना उतना हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होता है, मैल हटता है। जितना जितना मैल हटा, हमारी अतीन्द्रिय चेतना जागृत होगी, जितना जितना अतीन्द्रिय चेतना जागृत होगी, हम मोक्ष के निकट चले जाते रहेंगे, आत्मज्ञान बढ़ेगा, वीतराग की दिशा में हम प्रस्थान कर पाएंगे। तो इसलिए जो बात मैंने कहा, भगवान ने जो बात कही, पद्मम नाणम, भगवान ने कहा सबसे पहले ज्ञान करो, तो दया, दया उसके बाद होगी। हमारे रमन भाई बहुत बार बोलते हैं, मैं खूब ध्यान करता हूँ, मुझे ध्यान में रुचि, और मुझे महाप्रज्ञ जी जो जो ध्यान के लक्षण बताते थे, काफी संतोषजनक मैं उस दिशा में प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं जब इतना समझ नहीं था, मुझे भी लगता था खाली ध्यान कर लिया तो सब हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है ध्यान के लिए भी ज्ञान जरूरी है। बिना ज्ञान के ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान की दिशा में आगे प्रस्थान करना। हालांकि रमन भाई तो ज्ञान भी बहुत करते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते थे, अभी बोलते स्वामी जी मैं आपकी कोई क्लास नहीं छोड़ता हूँ, आगे पीछे सुनूंगा ही सुनूंगा। देश्या गुणस्थान, ऐसे जो जैनिज्म का टेक्निकल चीजें हैं वो सारे भी सुन के समझना बड़ी बात है। चलो मैं साधुवाद देती हूँ, हमारे बहुत सारे जैन होकर के करते हैं, बड़ी बात है। शायद रमन भाई पटेल है तो पता नहीं मुझे जैन है या नहीं है, पटेल है तो शायद जैन तो नहीं है। अचानक से महाप्रज्ञ जी का दर्शन हुआ, जुड़ गए, जुड़े तो ऐसे ही जुड़े, जुड़ते ही चले गए। खैर बात मैं कह रही हूँ कि ज्ञान जितना पद्मम नाणम तवोदया, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है ज्ञान जरूरी है। तो भगवान ने कहा अन्नाणेन किमिताहि, अज्ञानी बेचारा क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ज्ञान हमको, ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल देखिए व्यक्ति को हित की दिशा में, जो कल्याण की दिशा है उसमें प्रवृत्त कराएगा, और अकल्याण की दिशा से हमको हटाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो ज्ञानी होगा किसी चीज में उलझेगा नहीं। न्यूट्रलिटी, मेरा क्या बिगड़ा, कहा तो कहा और किया तो किया, मेरा क्या बिगड़ा, ये उदासीनता भी किससे आएगी? ज्ञान के माध्यम से ही हमारे भीतर ये उदासीनता आ सकती है। अपूर्वकरण, एक शब्द आता है अपूर्वकरण, अपूर्व, पहले कभी नहीं हुआ। ज्ञान की साधना करें, कैसा? अपूर्वकरण, इतना ज्ञान करें आज से पहले मैंने कभी नहीं किया हो, ऐसा हमारा उत्साह जगे, आज से पहले मेरा इतना उत्साह नहीं जगा। जहां अपूर्व होगा, कर्मों की निर्जरा भी कैसी होगी, कैसी होगी? ज्ञान करने में अपूर्वकरण होगा तो कर्मों की निर्जरा कैसी होगी निखिल जी? जल्दी से बोलना चाहिए। मेरा प्रश्न सुनने में आया, समझने में आया, या सिर्फ आप बॉडी से प्रेजेंट हैं?
अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ अभी तक बॉडी से, क्योंकि इतनी देर तक कैसे बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो खैर थोड़ी देर तक चाहे बॉडी से चाहे मन से 10 मिनट अपन कर लेते हैं चर्चा। तो मेरा प्रश्न था, ज्ञान करने में यदि अपूर्व करण होगा, यानी इतना उत्साह होगा कि आज से पहले इतना कभी नहीं हुआ, उस स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा? कर्मों की निर्जरा भी अपूर्व होगी। जितना हमारे इधर एफर्ट्स अपूर्व होगा, निर्जरा भी हमारी अपूर्व होगी। तो आत्म सिद्धि की दिशा में प्रस्थान करना है, ये अपूर्व निर्जरा होगी। इसका मतलब ही है कि हम आत्मा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ज्ञान के समान देखिए दूसरा कोई नेत्र नहीं है। संसार को देखने के लिए क्या चाहिए? आंख चाहिए। आंख के बिना संसार सुना। वैसे आत्मा को जानने के लिए ज्ञान चाहिए। यदि हमने ज्ञान नहीं किया तो ये संसार, आत्मा का ज्ञान जीरो हो जाएगा, उधर बढ़ ही नहीं सकते। यहां तक कहा गया, देखिए ज्ञान को जीवन का श्रृंगार कहा है, आभूषण कहा है, और निकाचित कर्मों को तोड़ने वाला कोई है। निकाचित कर्म जानते हैं आप लोग? 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक दलिक और दूसरा जो से बोलिए, भूखे भजन न होए गोपाला। भजन कब होता है? कब होता है? पेट भरा हो। तो आवाज धीमी आ गई, इसका मतलब पेट तो भरा हुआ नहीं है। तो मैं बात कर रही थी, निकाचित कर्म की निर्जरा भी किससे होती है? ज्ञान के द्वारा निकाचित कर्मों की निर्जरा हो सकती है। तो ज्ञान का प्रकाश जहां होगा वहां अंधेरा टिकेगा नहीं। इसलिए देखिए, लोगस में सबसे पहला जो वर्ड आता है लोगस्सो, जो यगरे, क्या कहा भगवान ने? लोक को प्रकाशित करने वाले। किससे प्रकाशित करते हैं? संपूर्ण विश्व को, तीनों लोक को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले। तो ज्ञान का प्रकाश। इसलिए शिष्य, भगवान अपने शिष्य को क्या कहते हैं? नाणेणम दंसणेणम च चरित्रेणम तहे वय। तुम विकास करो, वड्ढमानो भवाह्य, विकास करो। किसमें विकास करो? ज्ञान में विकास करो, दर्शन में विकास करो, चरित्र में विकास करो, खंतिये मुक्तिये, क्षमा में और मुक्ति में विकास करो। ज्ञान से यदि लाभ यदि देखें हम, क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल हम जाएं, क्या क्या होगा आप ही बोलते चले जाएंगे। वाजपेयी जी कहा करते थे, एक बार मैंने सुना था उनसे, और अडवाणी जी, ये दोनों की दोनों मैंने सुना। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे लाइफ में कोई समस्या आती है, हम महाप्रज्ञ जी, पुस्तक किसी का भी खोल सकते हैं, मैं जस्ट उनकी बात कह रही हूँ। हम महाप्रज्ञ जी की पुस्तक खोलते हैं, जो भी पन्ना निकलता है, किसी भी, जो भी पुस्तक को एक उठा लिया, जो भी पन्ना निकलता है, ऐसा लगता है हमारे समस्या का समाधान लिखा हुआ है। सैकड़ों लोगों की मैं बोल सकती हूँ ये बात कि भाई आज ही ये बात सुने और समस्या का समाधान हो गया। पुस्तक का ये पन्ना खोला, समस्या का समाधान हो गया। तो समस्याओं का समाधान किससे होता है? ज्ञान के द्वारा। हमारा जो तीसरा नेत्र है, इंट्यूशन हम जगा सकते हैं, किससे? ज्ञान से हम तीसरा नेत्र को जगा सकते हैं। हमारे भीतर जो स्किल है, जो एफिशिएंट है, उसको हम किससे बढ़ा सकते हैं? ज्ञान के द्वारा बढ़ा सकते हैं। हमारे ये 5 जो इंद्रियां हैं, उनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको हम जागरूक कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। हित में प्रवृत्त हो सकते हैं, अहित से निवृत्त हो सकते हैं। तो एक श्लोक में बहुत सुंदर कहा है, देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमानों का समय किसमें बीतता है और मूर्खों का समय किसमें बीतता है? बोलिए, बुद्धिमान का समय किसमें बीतता है, मूर्खों का समय किसमें बीतता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, ज्ञान की चर्चा से
विद्वानों का समय बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम कालो गच्छति धीमताम। और जो मूर्ख लोग होते हैं, निद्रा में उनका समय बीतेगा, कलह में समय बीतेगा, व्यसन में समय बीतेगा। ठीक है, निद्रा, कलह, कहीं भी हमारा मन मुटाव होता है, आर्गुमेंट होता है, क्या सोचें, ये मूर्खों का लक्षण है। मैं मूर्ख नहीं हूं, छोड़ दो बात को। हम उस समय हमारा जो प्रेस्टीज का विषय बनाते हैं, छोड़ना सीखें। विकल्प आ भी जाए, तुरंत अपने आप को हम इंस्ट्रक्शन दें, सुझाव दें, ये मूर्खों का लक्षण है और मुझे मूर्ख बनना नहीं है। और थोड़ा सा भी ज्ञान हो, नाणस सार माया रो। दही का सार क्या है? विलोना करते हैं आप लोग, सुना है? मक्खन। ज्ञान का सार क्या है? जोर से बोलिए, उसको प्रैक्टिकल भाषा में बोलिए। आचरण। नाणस सार माया रो। भगवान ने क्या कहा? ज्ञान का सार है आचरण। अक्सर लोग बोल देते हैं अमुक व्यक्ति इतना ज्ञानी है और ये काम करता है, बोल देते हैं इतना ज्ञानी और ऐसा करता है। हालांकि मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी, जानना ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है। आचरण उल्टा पुल्टा करना, अशोक जी कौन से कर्म का उदय भाव है? किसी का आचरण उल्टा पुल्टा है जो नहीं होना चाहिए, वो कौन से कर्म से रिलेटेड है? मोहनी। मोहनी कर्म के कारण आप बोलेंगे इतना ज्ञानी है और सातों व्यसन है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इतना ज्ञानी है शराब पीता है, इतना ज्ञानी और जुआ खेलता है। इससे आप क्या कर रहे हैं? उसके ज्ञान की आसाधना कर रहे हैं। ज्ञान तो है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है, और गलत आचरण कर रहा है, वो कौन सी कर्म का उदय भाव? मोहनी कर्म का उदय भाव। उसके लिए हम भावना भाएं, काश इसके मोहनी कर्म का क्षोभसम हो तो आचरण अच्छा हो जाए। खैर, भगवान ने क्या कहा? नाणस सार माया रो। ज्ञान है, उसका सार क्या है? आचरण में बदले, आचरण का विषय बने, चारित्र का विषय बने तो ज्ञान की सार्थकता होती है। तो भगवान ने कहा अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञान की साधना कब करें? कब करें? निरंतर करें। ऐसा कोई क्षण न हो जिसमें ज्ञान की साधना न चले। और खुद को संस्कारी बनाए, दूसरों को संस्कारी बनाए। ज्ञानशाला चलती है। ये ज्ञानशाला क्यों चलती है? संस्कारों के जागरण के लिए। तो देखिए, हम स्वयं चक्रवर्ती बने। आज मैं कहना चाहूंगी स्वयं को चक्रवर्ती बनाए। कैसे बना पाएंगे? एक चक्रवर्ती कब बनता है? उसके पास 14 रत्न होते हैं। कितने रत्न? 14। 7 पंचेंद्रीय रत्न होते हैं, 7 एकेंद्रीय रत्न होते हैं। पंचेंद्रीय रत्न की एक बार बात छोड़ दीजिए। एकेंद्रीय रत्न चक्रवर्ती के 7 होते हैं। पहला रत्न होता है चक्र रत्न। कौन सा है? हमको चक्रवर्ती बनना, ठीक है। पहला रत्न होता है चक्र रत्न। चक्र रत्न क्या करता है? वो जो चक्र रत्न होता है, वो जैसे जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने के लिए जाता है, वो चक्र रत्न एक प्रकार से प्रकाश स्तंभ, रास्ता दिखाता चला जाता है, राह को रोशन करता है। हम भी 4 गतियों में भटकते आ रहे हैं, भटक रहे हैं, पता नहीं कब तक भटकेंगे। हमारे राह को रोशन करने वाला हमको ये ज्ञान रूपी चक्र रत्न हमको प्राप्त करना है, हमको समझना है। एक ये मनुष्य भाव है। देखिए, ना तो नरक में कुछ ज्ञान कर सकते हैं, ना तिर्यंश में कर सकते हैं, ना देवता भी विशेष कर सकते हैं, क्योंकि देवता में भोग विलास ज्यादा है, सुखी सुख है, नारकी में दुखी दुख है, तिर्यंश बेचारा
गति ऐसी है कि कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं तो कौन। अब देखिए यहाँ पर चिंतन क्या करना है, जब भी दुखी बने, दुख भोगने के लिए नरक गति है, यहाँ कुछ दुख भोगूं, ठीक है। जब भी खुशी अनुभव हो, मौज मस्ती करना है तो क्या सोचो, सुख भोगने के लिए देवगति है, यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करूं, ठीक है। आप एक बच्चा जब कॉलेज पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है, 20 साल 25 साल, उसको क्या बोलते हो, केवल पढ़ाई करो लाइफ बन जाएगा। 25 साल तक उसके पीछे पड़े रहते हो, पढ़ाई करो लाइफ बन जाएगा। कितना लाइफ, 50-60 साल के लिए। उसको बोलते तुम भी मेहनत करो, उसके पीछे आप भी लगे रहते। आपको भी अपना पूरा फ्यूचर का इतना बड़ा लाइफ बनाना है, उसके लिए खूब मेहनत करो। ध्यान रहे हमेशा, क्या दुख भोगने के लिए क्या है, क्या जल्दी से बोलिए, यहाँ मुझे दुख नहीं भोगना है, और सुख भोगने के लिए, मौज मस्ती के लिए देवगति है। यहाँ मेरा पुरुषार्थ करूं, इतना पुरुषार्थ करूं, इतना पुरुषार्थ करूं, भव का पुरुषार्थ एक भाव में करके सारे भाव को खत्म कर दूं, ये विकल्प चलिए। 5 घंटा सोते हैं, मुझे पता नहीं 5 घंटा तो कम लोग सोते होंगे, 7 घंटा सोते हैं, तो ये सोचो आज से मैं 10 मिनट कम सोऊंगा, आधा घंटा कम सोऊंगा, जितना भी सोते हैं। अरे सोने से क्या, सोने के लिए तो ये तिर्यंच गति है, बेचारा सोता ही रहता है। तो मैं बात बता रही थी, ये 4 गतियों को प्रकाशित करने वाला कोई है तो कौन है वो, ये ज्ञान है। चक्र रत्न का काम करेगा, आप चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। दूसरा है देखिए छत्र रत्न, छत्र रत्न क्या करता है, विपदाओं से आपदाओं से बचाता है, हमको 4 शरण विपदाओं से बचाएगा। कौन कौन से, आप लोग मंगल पाठ बोलते हैं, चत्तारि शरणम पवज्जामि, बोलिए आगे कौन कौन सा शरण बोलते हैं, जोशी जोशी, भाइयों की तरफ से आवाज नहीं आ रही, जल्दी से बोलिए। अरहंते, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, भाइयों की तरफ से सबसे आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। आप लोग मौन क्यों हो गए, कितना देखो बहने हमारे कितने अपॉर्चुनिटी देते हैं, भाई आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही तो सब मौन हो गए ताकि सबकी आवाज सुने, समझदार है बहने। चलिए ये 4 शरण, जब भी कोई आपदा आए क्या करें, बस इतना सही बोल दो, अरहंते शरणम पवज्जामि, एक शरण भी चले लो, आपको सारी समस्याओं से बचा देगा। पहले लोग नाम क्या रखते थे पता है, गोपाल, कृष्ण, और क्या क्या रखते थे, हैं नारायण, ये भगवान के नाम रखते थे। भले नास्तिक हो, क्या सोचते थे, बच्चे को बुलाएंगे भगवान सोचेगा मुझे बुला रहे, ऐसा ही चिंतन, ऐसा ही था। तो मैं कह रही हूं भले नास्तिक भी हो, समस्या आते ही क्या बोले, अरहंते शरणम पवज्जामि, बस अरहंते अब सहारा है और कोई सहारा नहीं। सिर्फ ये शरण में बात तो अपन घंटों कर सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा जल्दी से इस बात को खत्म करना चाहूंगी। और चक्र रत्न, छत्र रत्न जो आपदाओं से बचाएगा, 4 शरण ले हम। दंड रत्न, दंड रत्न क्या करता है, जो उबड़ खाबड़ भूमि होता है उसको समतल बनाता है। हमारे लाइफ में उबड़ भूमि को, जीवन को उबड़ खाबड़ किसने बना के रखा है, राग और द्वेष। ये राग द्वेष को दंड रत्न से हम, ज्ञान रूपी दंड रत्न से समतल बनाएं, समस्या खत्म हो जाए। चौथा है खड्ग रत्न, खड्ग रत्न करता क्या है, ये खड्ग यानी जो शस्त्र होता है, शत्रुओं का सफाया करता है। बोलिए आपकी लाइफ में शत्रु कौन है या नहीं है, हैं? जल्दी से, पैसा शत्रु है, कसाय, कसाय रूपी शत्रु, राग द्वेष रूपी शत्रु, उसको हमको सफाया करना है, और वो ज्ञान से ही कर सकते हैं। नहीं तो अब जैसे मान ली किसी ने कुछ कह दिया, एक हम गए थे यहाँ डेनवर गए थे, क्षमा पे बात चल रही थी, कर्म की कसाई की बात चली, तो एक बहन प्रवचन में रोती रही। प्रवचन के बाद हम गोचरी के बोले, समझी मुझे 1 मिनट बात करनी,
आकर के उसने कहा समझी जी मुझे शादी को 6 साल हो रहा है, 6 साल हो रहा है, शादी का पहला साल था, मैं इंडिया में थी, किसी कारण से मेरे जेठानी ने मुझे अकारण जेठानी ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। अब नई नई थी, कुछ कर नहीं पाई। अब दूसरी बार जब वो थप्पड़ मारने लगी, मैंने भी हाथ उठाया और मेरे सास ससुर आगे मुझे पकड़ लिए। उसके बाद मेरा यूएस आना हो गया, 6 साल हो गया, घुट रही हूँ, लाइफ में एक ही है, मैं जाऊं और उसको जोर से थप्पड़ लगाऊं। 6 साल से एक ही एम है और कुछ भी नहीं। अब देखिए ये शांति कब मिलेगी? थप्पड़ लगाने के बाद। ये क्या है? कसाय का उदय है। देखिए कसाय क्रोध, सामने वाला बोलता है तो बोल करके ही शांति होती है, लेकिन समझदार है, विवेकवान है, यही कसाय हमारे शत्रु है, यही भटकाने वाले हैं। शांति मिल सकती है। आग, कसाय को आग कहा गया है। जैसे आग को जलने के लिए क्या करते हैं? घी डालते हैं। ये कसाय रूपी अग्नि को प्रज्वलित करता कौन है? सामने वाले का वचन बोलेगा और ये भड़केगा, उसी में शांति मिलेगी। लेकिन विवेकवान है तो ये कसाय रूपी शत्रु को हम सफाया करें, ये ज्ञान रूपी खड्ग रत्न से हम सफाया करें। हमारा 5वां रत्न है चर्म रत्न। चर्म रत्न क्या करता है? इतने सारे जो समुद्र वगैरह आते हैं 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए, वो नौका का काम करता है। एक तीर से दूसरे तीर में ले जाने के लिए नौका का काम करता है। तो हमको पार करना है, संसार समुद्र को पार करना है। 3 चीज याद रखें, करना, कराना, अनुमोदन करना। आपको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं दान नहीं दे सकती, क्या करें आप? हैं? दूसरों को बोले देखो यहाँ दान देने से लाभ मिलता है। सामायिक नहीं कर सकते। अरे समझ जी का वो सामायिक का प्रवचन सुनो, मजा आ जाएगा। 10 व्यक्ति सामायिक करने लग जाएंगे और 10 का लाभ किसको मिल गया? मिल गया आपको। दूसरा जो कर रहा है एप्रिशिएट करो। देखो कितना इतना सब व्यस्त होते हुए भी देखो प्रवचन में आते हैं, वो सामायिक करते हैं, वो त्याग करते हैं। भगवान ने कहा खुद नहीं कर सकते हो तो अनुमोदना करो, दूसरों को करवा दो। ये सब चर्म रत्न का काम करेगा, करना, कराना और अनुमोदन करना। बच्चे को यदि कोई माँ बाप कहते हैं भाई क्या पढ़ा है संसार में, शिक्षा ले लो, बच्चे क्या बोलते हैं पता है? आप क्यों नहीं लिए? ले लो आप। ज्यादा किसी को मोटिवेट करेंगे वो यही बोलेगा भाई इतना दान की बात कर रहे हो, खुद दे दो। लेकिन देख के सामने वाला 4 सुनाए, वहां बोलना नहीं। बोल भी दे तो सहने की क्षमता ला, उससे भी आपकी निर्जरा हो जाएगी। तो चर्म रत्न तिन्नाणम तार्याणम, खुद तरें और दूसरों को तारें। ज्ञान होगा तभी हम दे पाएंगे। और मणि रत्न, मणि रत्न क्या करता है? कष्ट को नष्ट करता है। तो कष्ट को नष्ट करने वाला तो ज्ञान है वो। देखिए शारीरिक तन के लिए भी, तन की समस्या का समाधान भी करेगा, तो मन की समस्या का समाधान भी मणि रत्न बन करके करेगा। और अंतिम है काकणी रत्न, वो अंधकार का नाश करता है। भगवान ने कह दिया नाणस नाणम पयासयरम, ज्ञान प्रकाशक है, अंधकार को दूर करने वाला है। आप क्या बन गए? चक्रवर्ती। ये 7 रत्न आपके पास आ गए, चक्रवर्ती बन गए। तो हम ज्ञान में देखिए, कभी भी एक बार किसी कंडक्टर से पूछा गया भाई तुम्हारे बस में इतनी भीड़ क्यों होती है? आप लोग यहाँ से इंडिया जाते हैं और भी कहीं जाते हैं, फ्लाइट देखते हैं, कौन सी फ्लाइट देखते हैं? एक बार ऐसे ही नीति जी कोई फ्लाइट जब इंडिया जा रहे थे, बना रहे थे, बोले भाई एक फ्लाइट है वो $100 में इंडिया ले जाती है। कितने में? आप बोलेंगे नहीं जाना है तो भी हम जाके आ जाएंगे। तो सामने वाला बोला, जिसको सजेस्ट किए, तो बोले सामने जी ये देखो कितने दिन में पहुंचेगी। फ्लाइट देखते हैं, ये देखते हैं कितने घंटे में पहुंच जाएगी, कहाँ कहाँ स्टॉपेज। कंडक्टर से पूछा गया इतनी सारी यहाँ बसें हैं, तुम्हारे बस में इतनी भीड़ क्यों होती है? जवाब क्या दिया? मेरी बस नॉन स्टॉप चलती है। हमारा लाइफ भी ज्ञान की साधना नॉन स्टॉप चले, कहीं
कोई फुल स्टॉप ना लगे। मुझे अच्छा एक सुखद अनुभूति होती है, मैं जब यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं है, सारे जवान हैं। यहाँ जवानी कहाँ शुरू होती है? 70 साल के बाद। भगवान ने आगम में क्या कहा है? 70 के बाद 71वां साल का जो पहला दिन है वहां से बुढ़ापा शुरू होता है। लेकिन यहाँ रहने वालों की क्या होता है? 70 के बाद ये जो यंग है वो सब बूढ़े, उनको सोचना पड़ता है पानी का गिलास पिए या ना पिए, नहीं है ऐसा। तो बात बता रही हूँ कि आज हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, मैं देखती हूँ 80 साल के, हमारे 90 साल के वीरेंद्र भाई हैं, हसमुख भाई हैं, रमन भाई हैं, अपने आलोक जी हैं, स्वतंत्र जी हैं, ये इनको कोई कह दे बुजुर्ग हैं। नीति प्रिया, हम किसी क्षेत्र में अभी गए थे, नीति प्रिया जी ने कहा वो कुछ गोचरी करा रहे थे, उन्होंने कहा दादाजी बस। उन्होंने कहा मुझे आपने दादा कह दिया। कितने साल के थे? 90 ईयर्स के। उन्होंने कहा मुझे दादा कैसे कह दिया? मैं आपको दादा दिखता हूँ? खैर जो भी है, मैं बात ये बता रही हूँ कि नॉन स्टॉप हमारा पुरुषार्थ संसार में लगता है, देखिए चलो अच्छा है, साधुवाद के पात्र है, लेकिन यू टर्न हो जाना चाहिए। 80% संसार के लिए करते थे, 20% खुद के लिए करते थे, आप उल्टा कर दो, 20% संसार के लिए करो और 80% खुद के लिए करो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबको साधुवाद देती हूँ। यहाँ विशेष रूप से जो एफर्ट चल रहा है, आज ज्ञानशाला का ग्रेजुएशन किए हैं। देखिए ज्ञान का उत्सव तो मना, और कोई उत्सव मनाए या ना मनाए, ज्ञान का उत्सव अवश्य होना चाहिए। और ये जो ज्ञानशाला है, नाम अपन ज्ञानशाला बोलते हैं, ये क्या है? संस्कार शाला है। ज्ञान के लिए तो स्कूल कॉलेज भी है, लेकिन वहां पर सर्वांगीण विकास नहीं होता है, ऑलराउंडर डेवलपमेंट जो बोलते हैं अपन, आप लोगों को इसका अनुभूति नहीं होती। हम जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, मैंने देखा ज्ञानशाला जहां चलती है वहां के बच्चों के संस्कार, और जहां ज्ञानशाला नहीं चलती है वहां बच्चों के संस्कार में कितना रात दिन का अंतर होता है। तो ये सौभाग्यशाली है, सब कुछ हो गया, संस्कार नहीं है तो कितना ध्यान देते हैं बच्चों को, डांस क्लास में ले जाओ, ये एक्टिविटी में ले जाओ, वो एक्टिविटी में ले जाओ। यदि ज्ञानशाला में एफर्ट्स आपका नहीं बोल रहा है तो समझ लीजिए टाइम नहीं है, बच्चों को यही वीकेंड मिलता है। मैं सोचती हूँ वो माँ बाप बच्चे के लिए शत्रु के समान है जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते, ज्ञानशाला में नहीं लाते। वो माँ बाप को आचार्य महाप्रज्ञ जी की भाषा में उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। नारद जी रावण जी के पास गए, रावण जी बड़े शान से सब दिखा रहे थे, मेरा ये शाला है, ये शाला है, ये व्यायाम शाला है, ये आयुध शाला है। नारद जी ने एक ही बात पूछी, संस्कार शाला है या नहीं है? वो तो नहीं है। बोले ये सारी शालाएं बिना संस्कार शाला के, ये सारी शालाएं तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, कभी भी उत्थान का कारण नहीं बनेगा। और यही हुआ, एक संस्कार की कमी, उसका पतन हो गया। कहाँ 1.25 लाख उसके नाती थे और स्वर्ण लंका कहलाती थी, क्या कुछ नहीं था उसके पास, कितनी तो लब्धियां थी, कितनी सिद्धियां थी, लेकिन संस्कार नहीं था। उसके बिना सब कुछ धराशायी हो गया। और देखिए ज्ञानशाला में बच्चों को लाते भी हैं, सीखते भी हैं बच्चे। होना क्या चाहिए? पेरेंट्स हैं आप लोग, कोई टीचर्स भी हैं, क्या होना चाहिए? पेरेंट्स को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी, भूल जाओ अपना भी कोई लाइफ होता है क्या? जिनके छोटे बच्चे हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 2 साल खूब खपो वो लाइफ। नारियल के पानी को पता है, नारियल के पेड़ को कितना पानी दिया जाता है, कितनी बार देते हैं पता है? स्टार्ट में 1 या 2 बार दिया जाता है। सिर्फ देखिए वो 1 या 2 बार आजीवन वो अपने में पानी को सहेज के रखता है देने के लिए, क्योंकि सामने वाले ने मुझे दिया है। आपने इनका लाइफ बना दिया बच्चों को, फिर रोने पछताने की आवश्यकता ही नहीं। डरो मत, यूएस में है, क्या संगति है, इतना फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, वो कहीं भागना भी चाहे तो भाग ना पाए। कोई आपको कह दे कि आपका बेटा ऐसा गलत काम किया है, निश्चिंत रहो, कहने वालों में कमी होगी, बच्चे में कहीं
कमी नहीं हो सकती है। कब होगा ऐसा? जब हम उसका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बच्चे आते हैं, जो भी आप लोग दादा दादी पोता पोती आते हैं, विकल्प आता है, चलो बाहर से मान ले आएगी, चलो समृद्धि जी के पास ले जाए, 1 घंटा बैठेंगे, जो सीख के जाएंगे, आप देखिए उनके लिए कितना होल लाइफ के लिए उनके लिए वो संस्कार का काम करेगा। गांधी जी ने कभी गलत कोई चीज नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? एक बार जैन साधु के पास गए थे और 3 संकल्प किया था। वो कहते हैं वही 3 संकल्प, आजीवन में कभी व्यसन में नहीं गया, कभी वेश्यागमन में नहीं गया, कभी कोई नशा नहीं किया। किस लिए? सिर्फ एक बार का संकल्प। तो हम बच्चों के भविष्य का निर्माण करने की बात सोचें तो विशेष रूप से देखिए, हमारे जो भी टीचर हैं, दादा दादी भी हैं, सभी जितने भी बैठे हैं, सबके बच्चे, कैसे हम उनको संस्कार दें। तो ये ज्ञानशाला बहुत अच्छा शाला है, जहां पर ज्ञानात्मक भाग्य का निर्माण होता है, जहां पर भाग्यात्मक भाग्य का निर्माण होता है, जहां पर स्वास्थ्यात्मक भाग्य का निर्माण होता है और जहां पर प्रतिष्ठात्मक भाग्य का निर्माण होता है। और आइडल बनाना है। बच्चे सीखते कहाँ से हैं? एक बच्चे से पूछा गया, नहीं, एक बच्चा माँ के पास बैठा था, उसने देखा माँ मशीन सिल रही थी और मशीन से खटखट की आवाज आने लगी। अब बोले खटखट की आवाज आने से आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मशीन तो नहीं भी चलाते होंगे, मुझे पता नहीं। खटखट की आवाज से क्या किया जाता है? तेल डालते हैं। बच्चे ने देखा, आश्चर्य हुआ, खटखट की आवाज गायब। कल हम अमित जी कहाँ बैठे हैं ना, नींद ले रहे हैं, कल गए थे इनके घर गोचरी, तो श्रीमती जी थोड़ी सी, नाम वर्षा है, ऐसे तो बरसती नहीं है, कल बोल रही थी कि अच्छा किया, आज पंखे की सफाई कर रहे थे तो पंखे से खटखट की आवाज आने लग गई है। तो बोले $500 तो गया इसको ठीक कराने के लिए। खटखट की आवाज, मैं क्या कह रही हूँ, खटखट की आवाज, ऑयल डाल दो ठीक हो जाएगा। बच्चे ने देखा खटखट की आवाज इतनी जोर से हो रही थी, माँ ने डाला सारे छेद में, गायब हो गया आवाज। एक दिन पापा सो रहे थे, जोर जोर से खर्राटे भर रहे थे, क्या किया, वही शीशी लेके आता है जो माँ ने मशीन में डाला था और कान आंख नाक सब में डालने लगा। माँ ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले पापा के अंदर से इतनी जोर जोर से खटखट की आवाज आ रही है, उस दिन मशीन में डाला था, आवाज गायब हो गई थी, आज पापा की आवाज आ रही है। मैं कहना चाहती हूँ बच्चा देख के सीखता है, बोल करके जो चीज सिखा नहीं सकते हैं। जिनके भी घर में बच्चे हैं, आपका लाइफ कुछ भी है, आप स्वयं को आइडल बनाओ। यहाँ पर जो प्रशिक्षिकाएं हैं, देखिए समय भी मिला, आप ध्यान करने लग जाओ, बच्चों के साथ कोई बात करने लग जाओ, मजाल है कि आप आपस में बात करो। तो बच्चों के लिए आइडल है, जो आपको देख के जाएंगे वो आप वो सीखेंगे। और मैं उनको सबको साधुवाद देती हूँ, ज्ञानशाला में तो सिखाया जाता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खपते हैं। मैं बात ये वीर की कर रही थी, दिपेश जी की, छोटा सा बच्चा है 4 साल का, कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। एक ही बात करेगा, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मोक्ष जाना है। भाई ये काम करने से मोक्ष जाएंगे तब तो कर लूंगा, जो भी काम बोलो ये काम करने से मोक्ष जाएंगे तब तो मैं कर लूंगा। कैसे संस्कार देना वो सीखो आप। हर चीज को बच्चे को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, प्रलोभन दो। अपने ये नवीन जी बैठे हैं, ये भी बच्चे को काफी संस्कार देती हैं। छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स को मैं देखती हूँ इतने अच्छे संस्कार देते हैं। बहुत ज्यादा देखिए नीति प्रज्ञा जी का काम पड़ता है, मेरा थोड़ा बहुत ही काम पड़ा है, बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जब देखती हूँ मुझे आश्चर्य होता है। छोटे छोटे बच्चे, उत्कर्ष आता है वो 1 घंटा बैठेगा, भूल जाता है पेरेंट्स को, बोलेगा थोड़ी देर और बैठेंगे सामने जी के पास, थोड़ी देर और बैठेंगे। वीर को भी एक दिन 1.5 घंटा में यहाँ अकेला था, उस दिन यहाँ प्रवचन चल रहा था, वहां समृद्धि जी के पास बैठा था। समृद्धि जी ने कहा कि भाई मुझे भूख लग गई है, थोड़ा खाने का सोच रही। खाना वाना तो होता रहेगा, अपन ज्ञान करते हैं, खाना वाना तो बाद में भी होता रहेगा। देखिए बच्चा को करके ये बोला, वो ये देख रहे थे इसको भूख लगी है क्या। एक बच्चा को करके ये कहना कि हम कुछ और सीखते हैं, कुछ और सिखाओ, और ध्यान भी करता है, ऐसा लगता है कि कितना डेप्थ में जाके करता है। तो खैर बात मैं बता रही हूँ, बच्चा देख के सीखता है, तो माँ बाप को, दादा दादी को, टीचर्स को अपने आप को आइडल बनाना चाहिए। और जैसे ये बड़े बड़े कंपनियों में क्या करते हैं पता है,
1 घंटा काम करेंगे तो तुमको नाश्ता फ्री, 2 घंटा काम करेंगे तो आने जाने का गाड़ी फ्री। ऐसे स्कीम रखना चाहिए। आलोक जी ध्यान दे सकते हैं आप। भाई टीचर के बच्चों को जो अप्रिशिएट करते हैं, टीचर की क्या किस क्लास के बच्चों ने क्या किया है। आलोक जी भी काफी खपते हैं, बच्चे के प्रति बहुत डिवोटी हैं, बच्चों के प्रति ज्ञानशाला कैसे। शीतल जी ने भी बहुत मेहनत किया है, पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, बच्चों के साथ करना, बहुत साधुवाद के सारे टीचर्स के साथ करना। तो आज के दिन मैं शीतल जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आलोक जी को देती हूँ, सारे टीचर्स को। एक एक टीचर्स इतना सब खपते हैं। देखिए यहाँ प्रवचन छोड़ करके वहाँ ज्ञानशाला में समय देना बहुत बड़ी बात है। घर से आते हैं और बच्चों में समय लगाते हैं, जहाँ यहाँ पर इतनी व्यस्तता, उसके बावजूद भी सिर्फ यहाँ नहीं, आज जो भी कोऑर्डिनेट का काम करते हैं घर से कितना मेहनत करते हैं, उसको मिल भेजना, उसके साथ ये करना। तो मैं सबको साधुवाद देती हूँ, बहुत श्रम किया है। तो शीतल जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब शीतल जी बोले समझ जी अब मैं थोड़ी सी व्यस्त हो गई हूँ, अब इस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा आप बदल दो। तो अच्छा होता आप कंटिन्यू करते, क्योंकि सब आपके शीतलता की तले सब शीतलता की अनुभूति कर रहे थे। तो फिर भी शीतल जी की भावना का सम्मान करते हुए आज के दिन हम ज्ञानशाला के 2 कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, अनुषा जी और सुवर्णा जी। ये दोनों की दोनों अपने सेंटर में काफी काम करते हैं, समय श्रम लगाते हैं, और दोनों की दोनों टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे काफी खुश हैं। तो दो काम साथ में दे रहे हैं, टीचर का काम भी दे रहे हैं और साथ में ज्ञानशाला का कोऑर्डिनेट का काम भी करेंगे। बहुत श्रम करना पड़ता है, ज्ञानशाला का कोऑर्डिनेट का काम जो है काफी समय श्रम लगाना पड़ता है। काफी जनों ने किया है, अनुभव है, तो आज हम ये देते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, स्वयं भी बच्चों को भी सिखाएं। ज्ञान का मतलब ये कि हर सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लाइफ में ऐड करें। अब जैसे 3 साल का बच्चा है, उसको कहें देखो जितने साल के हो जाओगे उतना मिनट ध्यान करना है। 3 साल का है तो 3 मिनट ध्यान करें, 4 साल का है तो 4 मिनट। अब आप अपना सोचिए कितना ध्यान करेंगे आप लोग हैं? 50 मिनट। स्वतंत्र जी कितना ध्यान करेंगे आज से? कितना? 48 मिनट करते हैं ना। मैं क्या कह रही हूँ, जितने साल के है ना उतना मिनट ध्यान करो, जो जितने साल के। ठीक है, हसमुख भाई कितना ध्यान करेंगे? हैं 80 मिनट्स करेंगे। तो वापस मुझे अपडेट देना सारा कि भाई कितना क्या चल रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो भी चीज है थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करें अपन। तो बच्चों को देखिए, हालांकि समय संपन्न हो रहा है, मैं बात को एंड करती हूँ एक बार। बच्चों को ये भी कह सकते हैं, देखो भाई तुमको अपने टिफिन बॉक्स लेके, स्कूल में टिफिन बॉक्स लेके जाते हो, तुमको टिफिन बॉक्स में क्या लेके जाना है। आज का तुम्हारा टिफिन बॉक्स का ये आइटम लिख दो आपको, उसको तुमको फोकस करना है अपने गोल पे, तुमको फोकस करना है अपने टाइम मैनेजमेंट पे। 3 चीज। तो 7 दिन का हमारे टीचर ध्यान देंगे सारे, और पेरेंट्स देंगे ही। उनका प्रतिदिन का एक टिफिन बॉक्स बना दें। 7 दिन के उनके एक एक नेचर पर वर्क कराओ कि 7 दिन तुमको मत करो, क्या करें। आचार्य तुलसी ने एक नारा दिया, पता है कौन सा नारा दिया? मैं कहना क्या चाहती हूँ, बोले कौन बोलेगा? जल्दी से बोलिए। निज पर शासन फिर अनुशासन। हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं, बच्चों को बोलते हैं तुम गुस्सा मत करो, क्या करें? 7 दिन हम कोई किसी को जोर से नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो भी जोर से बोलेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, वो 5 मिनट स्टैंड अप रहेगा। ऐसे छोटा छोटा 7 दिन पर एक एक चीज को वर्क करें। देखो आपका पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा, एक धार्मिक माहौल बन जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये ध्यान दें, खुद भी ज्ञानशाला में आए, दूसरों को जैन नॉन जैन का कोई लेना देना नहीं। आप 5 व्यक्ति के साथ आपका संपर्क है, बोलो आपके बच्चों को मैं लेके जाऊंगा, आप भेजो इसमें। देखो कैसा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये व्यक्तित्व निर्माण की शाला है, संस्कार निर्माण की शाला है। तो ये जेबी सौभाग्यशाली है कि भाई उसको ये अवसर मिलता है कि आप बच्चों का भाग्य का निर्माण करते हैं। तो मैं सभी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हसमुख भाई को धन्यवाद देती हूँ, बच्चों को समय समय पर अच्छा मोटिवेट होते रहते हैं। और भी जो भी इससे जुड़े हुए हैं, हमारे पटेल जी भी,
अभी ज्ञानशाला के लिए छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं,